Welcome in this online orientation course on how to approach research in social science, conceptualization and methodological intervention. This is a semester-long program which started in July 2020 and it will last till December 2020. This is a course which is organized by Savitri Bai Mahila PG Mahavidyalaya, Sikar, in association with Pandit Deen Dayal Upadhyay Shekhawati University, Sikar, Department of Geography, Government Arts College, Sikar, Department of Geography, Government Lohia College, Churu. A very warm welcome today's special guest, Dr. V. Sucharita. She is faculty in NIPA and she is going to speak on doing an ethnography in qualitative research. Today, for the report presentation of the previous session, a report presentation in Hindi, I request Mr. Shubhendu Mukherjee. Shubhendu Mukherjee. For English. Thank you, sir. Good evening, all of you. My name is Shubhendu Mukherjee, and I will present the report on the session of Dr. Madhulika Sahu that was held on 4th October 2020. Dr. Sahu discussed on the topic qualitative research method and approaches, techniques of doing fieldwork during lockdown. The key highlights of her lecture were methods and approaches of qualitative research, techniques in qualitative research and doing fieldwork in lockdown, techniques in qualitative data analysis, and also research ethics. She started her session by quoting James P. Spradley quote on qualitative research. After that, she explained what is qualitative research, and she said that it is a holistic approach to questions that focuses on human experience, and that is typically a higher level of research involvement and participant observation. After that, she discussed why do we need qualitative research. She said, qualitative research seeks to answer questions systematically. It collects evidences, produces findings that were not determined in advance, and it also is specifically effective in obtaining culturally specific information that provides information beyond the human sense. After that, she discussed the approach of qualitative research and types of research design. She said that there are 6 major types of research design that are commonly used, and these are ethnography, narrative, phenomenology, ground theory, case studies, participatory role appraisal. She discussed each one of these designs very effectively and also quoted some good examples. After that, she talked about focus group discussions, and she said that focus group discussion is one of the most popular techniques in qualitative research methods. It involves gathering people from the similar backgrounds or experiences together to discuss a specific topic of interest. She also discussed the role of the moderator in focus group discussions. After that, she talked about netnography. She said it is a new approach in the qualitative research that combines archival and online communication work observation with new forms of digital network data collection, analysis, and research representation. After that, she talked about triangulation, and also after that, in the next segment, in the last segment, she discussed about the techniques of doing field work in the lockdown. She said going digital is the need of the hour, and we must go digital for doing the field work in the lockdown phase. She discussed some techniques on going digital, and these are WhatsApp group with participants, Skype calls for unstructured reviews, and WhatsApp calls for semi-structured interviews, and Zoom and Google Meet for the focus group discussion. After that, she talked about the techniques of data collecting digitally. She said contact a person, oral consent or consent with the emails could be a good help. Repertoire establishment on phone calls and video calls could be a good help. And after that, in the last segment, she talked about her own research work that was using 3 delay model studying until deaths. And in the last segment, she talked about some software, data analysis software such as Atlas.ti, its features, its uses. And she concluded her session by discussing the ethics in doing research, the case studies of ethical controversies, and finally, good practice versus fraud. And after that, question answer session was organized and the session was formally ended by Dr. Jitendra Soni. Thank you. Thank you, Shubhendu, for a nice recap. You have covered almost all aspects of the previous lecture. And now for report presentation in Hindi, I request Nimish Kumar. Sorry, Renu Bagadia. हिंदी में रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए मैं रेणु बगड़िया से गुजारिश करता हूं। Yes, sir. Good evening to all. शोध विषय का 22वां व्याख्यान डॉक्टर मधुलिका साहू द्वारा गुणात्मक विधि और दृष्टिकोण लॉकडाउन के दौरान फील्ड वर्क करने की तकनीक पर दिया गया। उन्होंने अपने व्याख्यान की शुरुआत स्प्रेडले की पंक्तियों से की। डॉक्टर मधुलिका ने बताया कि गुणात्मक शोध विधि का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक जांच है जो सवाल का जवाब तलाशता है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का उपयोग करता है, सबूत इकट्ठा करता है, विशेष रूप से जनसंख्या के मूल्यों, व्यवहारों व सामाजिक संदर्भ में
के बारे में सांस्कृतिक रूप से जानकारी प्रदान करने में निपुण है। यह एक मुद्दे के मानव पक्ष के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तत्पश्चात डॉक्टर साहू ने सामुदायिक अध्ययन में अन्य विधियों के बारे में बताया, जैसे फिल्म, वीडियो, फोटो, कहानी, जमीन सिद्धांत, केस स्टडी, मूल्यांकन, अवलोकन, साक्षात्कार समूह चर्चा आदि का विश्लेषण किया। डॉक्टर साहू ने त्रिकोणासन विधि का उपयोग बताया, डिजिटल साक्षात्कार के अर्थ व डिजिटल रूप से डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया से प्रतिभागियों को अवगत कराया। डॉक्टर साहू ने डेटा विश्लेषण को बताया तथा शोध में नैतिकता के 5 केंद्र बिंदु बतलाए, जिसमें प्रतिभागियों से सहमति लेना, गोपनीयता, किसी को हानि न पहुंचाना, शोषण न करना, भविष्य के अनुसंधान के लिए परिणामों से अवगत कराना। अंत में प्रोफेसर मधुलिका साहू ने शोध में अच्छे आचरण बनाम धोखाधड़ी की तुलना करते हुए व्याख्यान की प्रश्नोत्तर सत्र के बाद समाप्ति की। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद रेनू। बहुत ही सुंदर सारगर्भित तरीके से पिछले व्याख्यान की समरी करने के लिए, और आज की रिपोर्ट राइटिंग टीम का भी मैं साधुवाद यहाँ करना चाहूंगा। अर्पिता गिरी आज इंग्लिश में रिपोर्टिंग कर रही है और रेनू बगड़िया आज फिर से हिंदी में रिपोर्टिंग कर रही है। और अब आज के सेशन जिसमें हम वी सुचरिता को सुनेंगे। वी सुचरिता बहुत ही यंग स्कॉलर हैं, लेकिन इनका एजुकेशन के फील्ड में कमाल का एक्सपीरियंस है। अभी भी वो करंटली बहुत सारे स्कूल कल्चर, एजुकेशन इन ऑफ डिसएडवांटेजेस पीपल, ट्राइबल एजुकेशन, गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं। ऐसे यंग रिसर्चर को इस प्लेटफॉर्म पे पाकर हमें बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है। आज के इस कार्यक्रम जिसमें वी सुचरिता डूइंग एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च पर अपना व्याख्यान देगी, उसके मॉडरेशन के लिए मैं डॉक्टर रेनू पुनिया को आमंत्रित करता हूं। Thank you, Jitendra D. Soni sir, and most welcome all the participants who are here. Today we have a very young researcher, and I cannot say that she is young enough, but she is young in the sense of her age. But her experience towards this research and all the education field is really up to the mark, and we are amazed to have such a brilliant speaker today we have. So before welcoming her and inviting her for this on this forum, in brief I'm just going to introduce herself to all of you. Today we have Dr. V. Sucharita. She is assistant professor in NUEPA, which is now deemed university, known as National University for Educational Planning and Administration, New Delhi. She has done her master's with the gold medalist and a PhD in anthropology from Hyderabad Central University. After that, she has done his fellowship for her PhD work in the same anthropology of education. Her PhD research work specifically was in the area of school culture and education. So you can get the idea that how dedicated she is towards the education. Before joining the NUEPA, she was working at the Center for Public Policy, Indian Institute of Management, Bangalore. In various research projects, she has joined there, and she was also involved in the midterm career training program for the IFS officers. She has a long list of published articles in journals, national and international scenario. And her research interest includes privatization of school education, which is a very brilliant and bright issue nowadays, school culture, education management, gender and development, and education of the disadvantaged. Her specialization is in school culture and education, and we will be definitely benefited with her specializations because all we are belongs to same fraternity and facing the same kind of problem which she's worked on all these things. So my heartfelt welcome to Dr. V. Sucharita. As her name pronounced, that Sucharita means
a well-charactered lady. So welcome, Sucharita ma'am. And now the forum is yours, ma'am. Yeah, am I audible? Yeah, ma'am. Sure. Yeah. Thank you. Thanks a lot, Dr. Jitendra Soni, Dr. Renu Punia, and my heartfelt thanks to all the organizers of this program for giving me an opportunity to interact with such a diverse group. I was told that it is a mix of research scholars and faculty from different colleges. So thank you for giving me an opportunity. And a very warm good evening to all the participants here. I can see a good number of participants who have joined. And due to these pandemic times, we are exploring new ways of transacting, and we are using this online platform, and sometimes I feel this technology has become inseparable from our lives, especially in these pandemic times. So a very warm welcome to all the participants, a very good evening. The topic which I have chosen today, as Dr. Jitendra Soni has already mentioned, I have titled it as Doing Ethnography in Qualitative Research. Now, one more thing, I was told that this is a bilingual group. तो मैं English and Hindi मैं दोनों में मैं transact करूँगी sessions. एंड जो मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो बहुत ही मैंने सिंपल रखा है, एंड मैंने अपने स्लाइड्स को क्राउडेड नहीं किया है, तो वो सारे रिसर्च स्कॉलर्स को बेनिफिट होगा जो बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. तो मेरा प्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल है. कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. आप अपने चैट बॉक्स में यू कैन ऑल्सो ड्रॉप ए टेक्स्ट. I'll keep looking at the chat box also. So as it was already mentioned कि मेरा जो title है that is Doing Ethnography in Qualitative Research है. I have chosen this topic for a couple of reasons. First is that of course that this is a very obvious reason that my PhD work was on ethnography, and I have been practicing ethnography for many years. So I know the nitty-gritties of what exactly is ethnography and how it can be conducted. Second, and more importantly, this ethnography, it's a very, very unique method, and it is also gaining popularity in other disciplines. Ethnography जो basically उसका जो roots है वो anthropology में start हुआ था. The discipline of anthropology started this ethnography, but gradually हम ये trend देख रहे हैं कि दूसरे disciplines वाले भी इस method को they are embracing it. So I thought for all the research scholars and for all the faculty members, this will be a huge benefit to learn more and more about ethnography. So I'll just present my screen. Just a second, I'm new to the... Is it visible? Yeah, ma'am. Now it's... Okay, just a second. Okay, yeah. So this is doing ethnography in qualitative research. Now this is how I have structured my presentation. मैंने अपने presentation को ऐसे structure किया है. मैं start करूँगी meaning, origin and types of ethnography. कितने तरीके के types of ethnographies हैं? ये मैं क्या full screen कर सकती हूँ? F5 करने से? हाँ मैम, बिल्कुल हो जाएगा. Okay, thank you. Actually, हमारे यहाँ पे classes सारे Google Meet से होते हैं. Okay. So I'm using this Zoom for the first time. Okay, thank you. So this is the structure of my presentation. I'll start with giving you a brief idea. मैं एक overview दूंगी कि ethnography क्या है. मैं जब rapporteurs का report सुन रही थी तो मुझे idea लगा कि already थोड़ा सा आप लोगों को idea है कि ethnography क्या है. तो ये session में मैं पूरा detail में जाऊंगी. What is ethnography? उसका origin कहाँ से हुआ? And ethnography के क्या types हैं? Then ethnography हम कैसे कर सकते हैं? Doing ethnography हमको क्या-क्या हम उसमें techniques use कर सकते हैं? Then मैंने एक चीज include किया है, writing field notes in ethnography. This you may not get everywhere. I thought in ethnography, field notes are very, very important.
एंड कई बार ये आइडिया नहीं होता है कि हम कैसे लिखें फील्ड नोट्स, क्योंकि अल्टीमेटली हम जब राइटिंग, व्हेन वी डू रिपोर्ट राइटिंग, व्हेन वी डू आवर थीसिस राइटिंग, फील्ड नोट्स विल बी द बेसिस ऑफ आवर डेटा कलेक्शन. जो भी हमने डेटा गैदर किया है हम वो फील्ड नोट्स में रिकॉर्ड करते हैं. तो हाउ टू रिकॉर्ड इट, so that is why I thought this is another important aspect. So I have included field notes in ethnography. And finally, if time permits, I will also touch upon writing ethnographic research in particular, and in general how to do academic writing. Like Dr. Renu Punya was mentioning that all of you have to write a paper, a research paper. So I will also try to touch upon the nitty-gritties of how we are supposed to write a research paper, what things we should include, and how it should be more specific. So this is the basic structure of my presentation. Now I'll start with what exactly is ethnography. Okay, so ethnography is basically describing and understanding another way of life from the native point of view. Another way of life in the sense, हमारा जो भी सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी है, हम जब फील्ड पे जाते हैं तो द सब्जेक्ट्स हम जिनसे भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द another way of life from the natives point of view. उनके हिसाब से how do they view their lives, how do they organize their cultural aspects, their social aspects. So ethnography is basically describing and understanding this another way of life from the natives point of view. अगर मैं इसको literally अगर मैं बताऊं, ethnos is people, okay, and graphy is writing. So it is basically an account of the people whom we are studying in detail. It is, ethnography is very, very detailed. So it is a detailed account of the people whom we are studying. अगर इसका मैं और एक मीनिंग अगर मैं बताऊं, all these meanings are interrelated. Ethnography is the science of cultural description. Okay, मैं यहाँ पे कल्चरल डिस्क्रिप्शन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एथनोग्राफी का जो रूट है, दैट लाइज इन द डिसिप्लिन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. एंड एंथ्रोपोलॉजी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ कल्चर. ओके, इन एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी द कल्चर ऑफ अदर्स. सो दैट इज व्हाई इन अ वे एथनोग्राफी इज द साइंस ऑफ कल्चरल डिस्क्रिप्शन. मैं यहाँ पर एक फेमस कोट मैंने लिया है. दिस इज फ्रॉम ए वेल नोन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्विन हैरिस. नाउ फॉर हिम ethnography means a portrait of a people. Like I was saying that अगर हम literally ethnography का meaning देखें, it is a description of the people we are studying. Ethno is people and graphy is to write about those. So ethnography literally means a portrait of a people. An ethnography is a written description of a particular culture, their customs, beliefs, and behavior. Okay. Now, culture जो है ये एक बहुत ही broad term है. Okay. In this culture, we include several aspects. We also include things which are visible, things which are not visible. Okay. So the culture encompasses beliefs, values, then economic organization, political organization, socio-cultural systems, etc. So ethnography is a written description of a particular culture, the customs, beliefs, and behavior based on information collected through field work. Okay, so ये जो field work है, that is an inseparable part of ethnography. Okay, without field work we cannot do ethnography. In fact, in many contexts, ethnography and fieldwork को हम interchangeably use करते हैं. But of course we can do that. So without fieldwork, there is no ethnography. So that is why Marvin Harris has said it is based on information collected through fieldwork. Now, what are the aims of ethnography? It is basically to understand how the cultures that are studied work. मैंने यहाँ पे work को quote and quote किया है.
why I have written how the cultures that are studied work, because whenever we are studying other cultures, they are related with several aspects. चाहे वो उस कल्चर का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इंस्टीट्यूशंस हो, फैमिली, मैरिज एक्सेट्रा, रिलीजन हो, उनका बिलीफ सिस्टम हो. सो हाउ ऑल दीज वर्क टुगेदर, that forms the basis of ethnography. Okay, so the one of the major aim of ethnography is to understand how the cultures that are studied work. Second is to understand natives point of view. यहाँ पे natives point of view हम इसको बोलते हैं emic approach. Now I will briefly describe this. दो तरीके के approach होते हैं हम जब field work करते हैं. तो one is ethic approach. Ethic approach is basically from outsider's point of view, okay, as a field worker, as a researcher. But हम जब emic approach के बात करते हैं, emic approach means when we immerse in the field and when we try to understand the natives point of view. जब हमारे key informants, हमारे respondents का जो point of view है, हम जब उसको समझते हैं, that is the emic approach. This emic and ethic was coined by a scholar called named Kenneth Pike. Okay, so emic approach is basically understanding the natives point of view. How do participants, how do the informants or the respondents feel about a certain process, about a certain aspect, or about their own culture, etc. So that is the emic approach, that is from insider's point of view. Now, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये फील्ड वर्क एंड एथनोग्राफी ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं एंड कई बार इनको इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है. एथनोग्राफी इज ऑल्सो एन इन सिटू स्टडी. इन सिटू स्टडी मीन्स ये हम नेचुरल सेटिंग्स में स्टडी करते हैं. वी गो टू द फील्ड, वी लिव विद द पीपल with whom we are conducting the study, be it a tribal village, okay, be it an urban setting. मैंने ethnography किया था schools में, so school can also be a setting, okay. So it is an in situ study, meaning the study of phenomenon where it is naturally located. अगर मैं बताऊं तो ये it is in stark contrast to the survey method. Okay, in survey method, we may not always go to the field, we live with the people, we interact. हम survey में खाली questionnaires use करते हैं. Okay, whereas ethnography is very, very different. It is a detailed and in-depth study of the culture, जो हम जिसको हम detail में describe करते हैं. Basically, again, fieldwork two types के होते हैं. एक टोटल इमर्शन और एक पार्शियल इमर्शन. ओके, अब एथनोग्राफी में क्या है? एथनोग्राफी इट इज अ प्री रिक्विजिट, आई कैन से दैट इट रिक्वायर्स अ कंप्लीट इमर्शन इन द फील्ड. मैं अभी ग्रेजुअली आई विल बी गिविंग मोर एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ हाउ एथनोग्राफी कैन बी डन. Okay, but one of the basic prerequisite of an ethnographic study is we have to fully immerse in the field. That is, हम पूरा the rapport building जो हम बोलते हैं, rapport building is very, very important, which facilitates us in complete immersion in the field. So the crux of ethnography is it requires that the ethnographer live with the people whose culture he studies. Okay, so one very important aspect of ethnography is we should live with the people. Okay, then from the time of pioneer field workers onwards, it has been recognized that prolonged, intensive, direct exposure to the actual conditions of life is needed to understand a culture. Okay, how can we understand a culture? It is ये तब तक नहीं हो पाता है जब तक हम डायरेक्ट इंटरैक्ट ना करें.
जब तक हम उनके साथ रहें नहीं, जब तक हम उनके साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट ना करें और एक लंबे पीरियड तक फील्ड वर्क ना करें, till then it is very difficult to get a detailed understanding of the culture of a particular group or a village. So this involves direct observation of social behavior and participation in community life, as well as systematic questioning and discussion with informants. Okay, so ethnography में दो तीन चीजें हैं. First is field work, and second most important thing is participant observation. मैं ये थोड़ी देर में डिटेल में आऊंगी कि what is participant observation, how can we conduct participant observation, but these are the two basic things to conduct an ethnographic study. Now, what is the rationale? उसका rationale क्या है ethnographic study का? Basically, there are two underlying hypotheses जिसके basis पे हम ethnographic study we undertake. First is human behavior is complexly influenced by the context. मैं यहाँ पे ये context की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम अभी जो response दे रहे हैं, maybe after some time or in the presence of a third person, our response may be very different. Okay, if suppose I am coming to you with a questionnaire, मैं आप लोगों के पास एक questionnaire लेकर आती हूँ और मैं आप लोगों को पूछती हूँ कि आप ये टिक कीजिए. आप अभी जो response दे रहे हो and maybe after 1 week के बाद आप जो response देंगे वो different हो सकता है. Okay, so that is why I'm saying it is complexly influenced by the context. So that is why ethnography हम इसीलिए करते हैं क्योंकि ethnography में हम एक long term study करते हैं where a minimum period of 1 year एक mandatory requirement है. मैंने जब अपना PhD किया था, मेरा fieldwork जो था that was 18 months. Okay, मैंने 18 months का fieldwork किया था schools में. And I focused on privatization of education. ऐसे anthropologists हैं, मैं अभी example दूंगी, जिन्होंने field work किया है 2 years, okay, 3 years. So to get an in-depth understanding कि कैसे जो cultures हैं, how the cultures are working. Now, second hypothesis एक है कि human behavior has more meaning than its observable facts. इसका ये मतलब है कि हमें जो observe हम जो करते हैं, but the reality is much beyond that. What we observe and the reality is much beyond what we observe. Okay, it has more meaning. हमें जो दिखता है उससे ज़्यादा there can be an in-depth meaning. Okay, so it is usually said that it is socially constructed. Okay, the meanings are socially constructed. So that is why I'm saying human behavior जो है, it has more meaning than its observable facts. So that is why we often say that a long-term fieldwork is very, very important. Long-term fieldwork इसीलिए to understand the hidden meanings, okay, to understand the tacit or the implicit. Okay, it is not only the explicit, but also to understand the implicit and tacit meanings of social behavior. Now, and ये ethnography का roots कहाँ से है? Basically, ethnography जो है उसका origin हुआ है the discipline of anthropology. And ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही एक recent method है जो अभी हाल फिलहाल में आया है. No, it has its roots in anthropology and it's a very, very old method. And as I was already mentioning, कि anthropology का क्या crux है? Anthropology is all about understanding the culture of the people. Okay, so it basically started with understanding of the culture of simple societies. We call it simple societies, be it a tribal groups, okay, or studies on villages. Gradually क्या हुआ? ये extend हुआ in urban settings also, okay, and जो anthropology के जो horizons हैं, they started getting broader and
Nowadays, we are studying many other aspects, okay? Many other aspects, be it in education sector, be it in health sector, be it in development sector. So anthropology has now permeated in almost every sectors. But the essence remains, it is to study the culture. Culture in the sense, like मैं यहाँ पे quote करूँगी one of the earliest anthropologist, E.B. Taylor. Now E.B. Taylor बोलते हैं कि culture is in its broadest sense, okay, culture in its broadest sense is that complex whole wherein we understand the beliefs, values, and the meanings, okay, as a member of the society. So culture is basically to study the beliefs, the value systems, the customs, and everything. And one more thing, anthropology, it studies people at all times in all places. मैं ये क्यों बता रही हूँ at all times in all places? Basically, anthropology is very, very broad. Though इसका जो core है, that is to study the culture of human beings. Okay, but anthropology के basically 4 sub branches हैं. Archaeological anthropology, जिसमें हम आर्कियोलॉजी पे फोकस करते हैं. Then socio-cultural anthropology, wherein we study the socio-cultural systems. Then linguistic anthropology. Linguistic anthropology, wherein we study the languages of different cultures. And then physical anthropology. Physical anthropology, wherein we take into account the biological aspects of humankind. So that is why we study people at all times and in all places. So मैं ये इसीलिए ब्रीफ बैकग्राउंड दे रही थी क्योंकि जो इथनोग्राफी है उसका जो रूट्स है, उसका जो जेनेसिस है, that is in the discipline of anthropology. Now, what is the difference between ethnography and case study? जैसे कि मैं बोल रही थी कि ethnography requires a long-term engagement in the field and a complete immersion. And कई लोग ये confuse हो जाते हैं कि how ethnography is different from case study, because in case study also we have first-hand exposure to our respondents. Now, ethnography is more comprehensive and detailed when compared to a case study. An anthropological case study is primarily an ethnography. Okay, आप यहाँ पे difference देखना. An anthropological case study is primarily an ethnography. However, all case studies are not ethnographies. ऐसे जरूरी नहीं है कि हर case study में हम जाके लोगों के साथ रहें. Okay, ऐसे जरूरी नहीं है कि हम हर case study में एक लंबे दौरान तक field work करें. Okay, so all case studies are not ethnographies, but ethnography में हम case study as a technique ले सकते हैं. Okay, I hope you are getting the difference. There is a subtle difference. There is a subtle difference between ethnography and case study. What I'm trying to say is that all case studies are not ethnographies. Okay, but a case study may be, but an ethnography may use case study as one important technique. Okay? We use other techniques also like interviews, like observation, etc. So case study can also be one more technique of conducting an ethnography. Now, I'll give you some examples of ethnographic research. One of the earliest study है, that is Malinowski's ethnographic study of Trobriand Islanders. इस book का नाम है Argonauts of the Western Pacific. It's a very, very famous book, and ये fieldwork हुआ था during the First World War, and ये it's a very well cited book. And जो Malinowski हैं, उन्होंने 4 years का fieldwork किया था. The fieldworks continued for 4 years, and the period was from 1914 to 1918. And it's a very, very in-depth account of the Trobriand Islanders.
Second book is one very famous anthropologist, Margaret Mead, and इस book का नाम है Coming of Age in Samoa. So basically इन्होंने Samoans के बीच में study किया था, and she tried to find out the period of जो adolescence का जो period होता है, she focused on the period of stress and strain in this adolescence. So it is again another very well cited and often quoted work by Margaret Mead, which is Coming of Age in Samoa. अब इंडिया में one of the earliest studies and one of the very famous anthropologist is M.N. Srinivas. उनका training हुआ था basically anthropology में, and उनका जो study है among the Kurgs. He lived among the Kurgs in Karnataka, and उनका जो study है, the study is titled Religion and Society among the Kurgs of South India. So it is again another major works on earliest works on ethnography in India, and और एक very interesting book है which I would suggest all the research scholars and faculty members who are interested in ethnography. This study I would recommend. This is the Remembered Village. Now ये एक monograph है by Professor M.N. Srinivas. And this monograph is again based on the Kurgs of Karnataka, and this is the best example of how ethnography can be written. So this book, I would say, it is a must read for all those who are interested in doing ethnography. And within the field of education, I'll give you one more example. Within the field of education, one very famous study is Life at School by Meenakshi Thapan. Okay, Professor Meenakshi Thapan, Life at School. She spent a considerable amount of time. I think it was a result of 2 years of field work in Rishi Valley. There is one famous school, Rishi Valley School, in Chittoor district of Andhra Pradesh. तो उन्होंने ऋषि वैली स्कूल के ऊपर एक बहुत ही अच्छा बुक लिखा है. इट्स अ वेरी फेमस एंड वेल कोटेड बुक. इस बुक का नाम है लाइफ एट स्कूल. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन और इवन इन जनरल हाउ एथनोग्राफीज कैसे लिखते हैं एथनोग्राफी को, तो आप लोग ये बुक को भी रिफर कर सकते हैं, लाइफ एट स्कूल बाय मीनाक्षी थापन. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च. एथनोग्राफी कई प्रकार के होते हैं. देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी. मैंने यहाँ पे 4 लिस्ट किए हैं, बट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट ये जो 4 लिस्ट किए हैं मैंने, इट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन. ओके, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एथनोग्राफीज. वन इज ट्रेडिशनल एथनोग्राफी, देन माइक्रो एथनोग्राफी, macro ethnography, and critical ethnography. So these are the 4 major types of ethnography within the context of education. Now I will come into detail. What is traditional ethnography? Traditional ethnography जो है, it basically takes place in small communities. Okay, in small communities we go there, we spend time, we interact, we build rapport, and another important aspect is we should learn the language which our respondents speak, ताकि वो rapport अच्छे से establish हो. So one important aspect of traditional ethnography is it takes place in small communities, and ethnographers live in these communities for extended periods. ओके, ऐसा नहीं है कि फील्ड वर्क 1 महीने 2 महीने करके हम वापस आ जाएं एंड हम उसके बेसिस पे हम एक रिपोर्ट राइटिंग कर लें. एथनोग्राफी रिक्वायर्स अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ स्टे विद आवर रेस्पोंडेंट्स. देन एज आई वाज मेंशनिंग, लर्निंग लोकल लैंग्वेज. ठीक है, लर्निंग लोकल लैंग्वेज इसीलिए ताकि रैपो बिल्डिंग अच्छे से हो, एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो सके, एंड जो हमारा जो इंटरव्यूज है, जो इंटरैक्शंस हैं, ओके, दैट शुड बी मोर मीनिंगफुल एंड मोर फ्रूटफुल.
That is why we often say that it is best if we learn the local language. I'll give you one more example here. I have a friend who was doing her PhD in Oxford, and she was from New Zealand. So for her fieldwork, she traveled to India and she did her fieldwork in Hyderabad. And for 2 years, she stayed in Hyderabad and she tried to learn Telugu so that she can conduct interviews, she can interact with local people. She used to buy books, how to learn. जो books आते हैं, उन्होंने पहले book से start किया, okay? फिर she hired a trainer language सीखने के लिए, and she was considerably good enough to speak Telugu after an year. Okay, so once her rapport was established and she learned the language, then she started doing her interviews, conducting interviews, and participating in various activities, etc. So, as far as possible, it is always advisable कि हम वो language बोले जिनको हम research कर रहे हैं. Okay, then establish rapport with the people. As I was mentioning, establishing rapport is very, very important, and employ a variety of techniques to supplement participant observation. मैंने पहले भी mention किया है कि ethnography में two basic requirements are, एक है long term field work और एक है participant observation. अब ये participant observation क्या है मैं वो बताऊंगी in my subsequent slides. So apart from this, we use several other techniques, and I will also detail out what are those techniques. So this is all about traditional ethnography. Now, within the context of education, there is also one type of ethnography which is microethnography. Ab microethnography kya hai? Here we focus on smaller units like classroom events. Okay, in microethnography we use जो scale है वो बहुत कम हो जाता है माइक्रोएथनोग्राफी में. एक एंटायर स्टडी खाली हो सकता है क्लासरूम इंटरेक्शंस पे. ओके, सो द यूनिट बिकम्स वेरी स्मॉल, बट हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं. सो द फोकस इज ऑन स्मॉलर यूनिट्स लाइक क्लासरूम इवेंट्स, होम, प्लेग्राउंड इवेंट्स और एजुकेशन प्रोजेक्ट्स. सो हियर द क्रक्स इज दैट वी स्टडी अ much smaller unit but in much greater detail. Okay, it is especially applicable in social linguistics. Social linguistics is again another field of study in anthropology of education, wherein we try to understand how language plays a very important role in education. Okay, so it is especially applicable in social linguistics, where the unit of study is teacher-people interaction. So basically, the crux is in microethnography, we study a very small unit in a greater detail. Another major type of ethnography within the context of education is macroethnography. Now, macroethnography may it is much broader. Okay. And it is argued that school, especially classroom, is only one of the many settings. Okay, चूंकि ये बहुत broad है, तो हम usually बोलते हैं कि जो school और classroom है, वो एक single context है, but there are several other contexts which require attention. Okay, so it cannot be confined to a single unit. In microethnography, we confined our study to a single unit. Macroethnography में ये बहुत wide है. Okay, it focuses on how schooling is linked to other institutions, how schooling is linked to a particular community, how schooling is linked to a society. Okay, तो ये wider institutions में हम कैसे इसको link कर सकते हैं? So basically, it is to understand how societal forces, including beliefs and ideologies of the larger society, influence the behavior of participants in the school. कैसे जो processes हैं within the community, within the society, वो processes in the schools को influence करते हैं. Okay, so basically it is much wider than microethnography.
Finally, there is one more type which is called as critical ethnography. Now, critical ethnography is it takes a very different stand, and it disrupts the status quo and it attempts to change the existing conditions towards greater freedom and equity. It is अगर मैं थोड़ा सा इसमें theoretical if I want to explain, जब हम education की बात करते हैं, there are two views on how education is viewed. One is that education, it helps in upward mobility of people. On the contrary, there is also a view that education is a socially conservative force. Okay, it is not necessary that education will always lead to upward economic and social mobility. And इसके जो main proponents हैं like Bourdieu and Passeron, ये लोग बोलते हैं कि it is a socially conservative force and it is not necessary that it always aids in upward mobility. In fact, education perpetuates the existing social inequalities. So ये basically इसका theoretical view है, and इसका जो methodology है, it is grounded in anthropology and also it is taken from critical sociology. So this is the fourth type of critical ethnography. अगर मैं outside of education context अगर मैं बात करती हूँ, तो नए traditions आ रहे हैं ethnography के. One is the multi-sited ethnography. Okay, this is outside the context of education. This is in general, there are some other types of ethnographies. One is the multi-sited ethnography. In this, the researcher conducts fieldwork in more than one site where the subjects can be found. Okay, so इसमें क्या है, researcher एक particular field site में limit नहीं होता है. For instance, अगर मैं study कर रही हूँ migrant laborers की, अगर मैं कोई in-depth study करना चाहती हूँ on migrant laborers, if suppose migrants are moving from rural to urban place, and again if for some reasons the same group of migrants are moving back to their hometown again, so what happens, I would also travel with them wherever they are traveling. Okay, so that is why it is called as multi-sited ethnography, where our respondents are moving, the researcher also moves along with them, and we conduct studies in multiple sites. Then there is also one more tradition arising, which is the autoethnography. Autoethnography में the fieldwork narrates the lived experiences of his or her own life. Okay, ये हमारा सेल्फ का है, इसके ऊपर भी हम ethnography आजकल, this is a new trend, the ethnography of self. It is our own life experiences which we are recording and which we are writing. In fact, one of the latest trend is, I would say कि अभी जो हम इतना virtual space को जो use कर रहे हैं, especially during these pandemic times. Okay, so there is also this virtual ethnography. Okay, in virtual ethnography, what are the kind of interactions that takes place virtually? Okay, so this is also another major trend. It is a very latest, very upcoming trend, that is virtual ethnography. So these are the various types of ethnography. That is the traditional ethnography, then micro ethnography, macro ethnography, critical ethnography, and ये जो basic, ये जो नए trends हैं like multi-sited ethnography and auto ethnography. Now, I hope I'm clear till here. समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं जो बोल रही हूँ? तो अब तक मैंने क्या बात किया? Yes, ma'am. Okay. अब तक मैंने बोला कि ethnography का क्या aims हैं? What is ethnography? What are the aims of ethnography? And ethnography का genesis कहाँ से हुआ? उसका क्या roots है? Basically, the roots is in anthropology. And ethnography के क्या prerequisites, I would say. What are the prerequisites of ethnography? That is the fieldwork, participation, and long-term and prolonged involvement in the field. And what are the major types of ethnography, which is traditional, macro, micro, multi-sited, and auto-ethnography. Now, अभी आप लोगों को आइडिया हो गया कि ethnography क्या है.
Now, if you want to take an ethnographic study, इसको हम कैसे करना चाहें? Okay, this is our next step कि हम कैसे ethnography कर सकते हैं? How to do an ethnographic study? The first important thing is entry and establishment of role. मैंने इसको यहाँ पे टाइटल एंट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रोल इसलिए दिया है क्योंकि many a times gaining entry into the field is very difficult. ये मैं यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, मैं उनके बेनिफिट के लिए मैं एक्सपीरियंसेस में शेयर कर रही हूँ. Many a times entry into the field is very difficult. मैंने अपने PhD के दौरान मैंने जो स्टडी किए हैं, even I will give you the examples. मैंने अपने PhD में privatization of school education was my broad area. मैं जब प्राइवेट स्कूल्स के पास जाती थी, प्राइवेट स्कूल्स यूजुअली मुझे अलाउ नहीं करते थे because they always have this suspicion कि why she will spend 1 year in the school. Okay, what is the study which she will be doing? In fact, I was asked n number of questions that what is the motive of your study. So they were very suspicious. This happens everywhere, not only in school, but even if we go to a village to study, even if we go to a tribal people. So many a times entry becomes very difficult. It is only through continuous persuasion and continuous, we have to go to many places to get an entry into one particular school or one particular village. So that is why I have given this title, Entry and Establishment of Role, because many a times entering the field itself is very challenging. Then one should learn the native language. मैंने ये पहले भी बोला है कि अगर आप native language से conversant हो, then much of the issues with the fieldwork will be addressed. ये बहुत हद तक ये बहुत आसान हो जाता है अगर हम वो लैंग्वेज जानते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं. Then involvement in community activities, ये सारे basically these are all part of rapport building. Okay, involvement in community activities, चाहे कोई भी ritual हो, okay, schools में चाहे कोई भी activities हो, be it their school functions, their morning assembly. अगर हम village में study कर रहे हैं तो their rituals or the rites, the passage we say, the birth rituals, the marriage rituals, when we are observing those rituals and involvement in community activities, then the researcher tries not to be identified with any particular group in the setting. This is very important. In fact, I would say this is ये एक बहुत ही major ethical principle भी है. मैं ethics of fieldwork की मैं थोड़ी देर में बात करूँगी, but यहाँ पे चूँकि मैंने mention किया है, the researcher tries not to be identified with any particular group. अगर मैं फील्ड में जाती हूँ, अगर मैं कोई विलेज में जाती हूँ एंड मुझे एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ अगर मैं आइडेंटिफाई हो जाती हूँ, then the data which I will get, it may not be objective. Okay, उसमें क्या है, उसमें biasness ज़्यादा होगा. It will be more biased if I am associated with a particular group. So our attempts should be to be as neutral as possible. ठीक है, not to be associated with any particular group or with any particular people, but to be as neutral and as objective as possible. Now, another important thing is monitor the views participants have of the ethnographer. इसका ये मतलब है कि हम फील्ड पे हमारे जो respondents हैं, whether they have any any wrong notion of us, कि ये जो डेटा है वो कहीं डिस्क्लोज करें. These are all related to ethical principles. Okay, that why this researcher is collecting this data. Okay, we should see that there is no misunderstandings between our participants and us. No misunderstanding, no miscommunication between the researcher and the researched. And finally, participants must come to trust and value the observer. Okay, so ethnography में trust building is very important. इसीलिए हम बोलते हैं कि long term field work बहुत जरूरी है, at least for an year and extended to the second year.
क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल फ्यू मंथ्स तो हमारे रैपो बिल्डिंग में चले जाते हैं। इनिशियल फ्यू मंथ्स हम डेटा कलेक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं, we start with rapport building, and once the rapport is established, then we start our data collection and we start using our techniques. So the trust is very very important. As I was already mentioning, critical component in fieldwork is rapport building. And I was giving you my own experience of my PhD research, and I will also give you one more very recent example. I was doing one study on RTE, okay, Right to Education Act, and I was basically studying the 25% reservation इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स। इसके ऊपर काफी डिबेट हुआ था। जो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स हैं उसमें जो 25% रिजर्वेशन होते हैं स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम द सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। सो आई हैड टू डू फील्ड वर्क इन स्कूल्स, एंड अगेन दिस वाज अगेन अनदर एक्सपीरियंस, एंड आई वाज डूइंग इट इन दिल्ली। ओके, जो दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, मैंने उनमें मैंने ये 25% रिजर्वेशन का मैंने स्टडी किया था, एंड अगेन schools were not allowing me to conduct the study because again the same thing, they had this suspicion and lack of trust that why is she conducting the study, and what if the information is disclosed somewhere, things like that. So there was a lot of insecurity, but ultimately it all depends on how the researcher is approaching the school, okay, and how we are able to convince and how we are able to persuade the schools that no, this is for purely research purpose, and the intentions should be clearly explained, that this is not, the information and data will not be disclosed to anyone. So this is how it was conducted, and the paper was very recently published in an international journal. And it is again, if the scholars are interested in understanding how to write an ethnography, then ये papers I will forward it to the organizers, and they can again forward it to you कि how to write an ethnographic study. Okay, again it is an art. It is not that जैसा हम बाकी methods को use करके लिखते हैं, it is completely different in ethnography. In ethnography, we try to bring out the participants' voices in our writing. Okay, हम exact जो रीडर है उनको लगना चाहिए कि वो जब पढ़ रहे हैं, the reader is actually in the field, I should say. Okay, जो हमारे portraits of people हैं, जो हमारा जो processes है, various social processes, it should be described in such a vivid way that the reader should get an idea of what exactly is happening in the field. So again, writing is again, I will tell you in detail. Abhi, I will continue with this rapport building. So the critical component in fieldwork is rapport building. Rapport building is a two-way process. मैंने यहाँ पे two-way process इसीलिए बोला है because in rapport building, we try to understand our informants and the informants try to understand us. Okay, that is why I am calling it as a two-way process. क्योंकि हम जब field में होते हैं, initial stage में हमसे ज़्यादा हमारे जो informants हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं. Okay, so the first 2-3 months हमारे इसी में जाते हैं कि जो informants है वो हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई आप यहाँ पे क्यों हो, आप ये data क्यों collect कर रहे हो, आप इस data का क्या करोगे, आप कहाँ पे रहते हो. So we get more questions. So first 2-3 months it is rapport building is a two-way process wherein हम उनको समझते हैं और वो हमें, they also try to understand the researcher. So basically एक researcher and the researched में एक relationship बनता है. It is a relationship based on trust. Okay, it is a relationship based on mutual trust, I would say. Now, किस प्रकार का हम data collection करते हैं field work में? Okay, as I was saying, ethnography में बहुत ही in depth and detailed में हम study करते हैं. So it is the form and content of verbal interaction between the participants. ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे कि सर्वे में होता है. सर्वे में it is basically the interaction or filling up the questionnaire and
between the researcher and the researched. But ethnography चूंकि ये बहुत broad है and बहुत ही in-depth study होता है, it involves form and content of verbal interaction between the participants. मतलब कि दो participants या a group of participants आपस में क्या बात कर रहे हैं. That is also our important data. Okay, आपस में उनके क्या इंटरेक्शंस हो रहे हैं, या किसी सोशल प्रोसेस में या फिर किसी इंसिडेंट में उनके क्या विचार हैं, तो वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं. दैट कैन बी अ फॉर्म ऑफ डेटा. देन फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ वर्बल इंटरेक्शन विद द रिसर्चर. फर्स्ट इज आपस में, ओके, among themselves. सेकेंड इज विद द रिसर्चर. ओके, विद द रिसर्चर किस प्रकार के इंटरेक्शंस हैं, ओके, उनके क्या व्यू पॉइंट्स हैं, उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं. देन अपार्ट फ्रॉम वर्बल इंटरेक्शन, we also make use of non-verbal behavior, the symbols, the signs, the body language, okay, the gestures. ये सारी भी हमारे डेटा कलेक्शन का एक पार्ट है. ओके, ऑल दिस बिकम्स पार्ट ऑफ अ डेटा कलेक्शन. देन we also make use of archival records, artifacts, documents. Okay, so we also make use of the documents. उनके जो भी artifacts होते हैं, जो भी उनके जो records हैं, we also use this. Now, अब जब techniques की बात आती है, तो in ethnography, पहले मैं general बताऊंगी, then I'll come to the particular in ethnography. Observation जो है, I think you will have a session on observation. I was looking at the schedule and मैंने देखा था कि observation पर एक exclusive session है. I think so, if I am not wrong. But still, I'll touch up in here. What is observation? Okay, observation, again, I would say there are basically three types of observation. One is participant observation, non-participant, and quasi-participant. Participant observation जो है, we are fully immersed in the field. ओके, हम फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिविटीज में. बी इट वी स्टे विद द पीपल, ओके, एंड वी टेक पार्ट इन द एक्टिविटीज विच आर हैपनिंग इन द फील्ड साइट. अब ये चाहे फील्ड साइट एक विलेज हो, एक ट्राइबल एरिया हो, एक स्कूल हो, या एक, अगर आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो तो फिर एक हॉस्पिटल हो. सो इट कैन बी एनीथिंग. सो वी फुल्ली पार्टिसिपेट in the activities. Then there is also non-participant observation, wherein we observe but we don't participate. मतलब हम एक distance से we observe things but we do not participate. And then there is also quasi-participant. Okay, quasi-participant is a midway. It is not fully participant observation, it is not non-participant, but quasi-participant, wherein we may participate in some activities but we may not participate in all the activities. For instance, अगर village में हम rituals हो रहा है, be it death rituals, be it marriage rituals, okay, here we will watch from a distance because we cannot fully participate in those rituals. Okay, so in those cases we call it as quasi participant. Now, जब हम ethnography की बात करते हैं, तो one of the major method here is the participant observation. Okay, participant observation, wherein we fully immerse in the field and we involve in most of the activities, of course with the combination of quasi participation. Okay, we ये complete participant observation रहता है, but in some cases we do quasi participants. Now, apart from observation, we use another technique which is interview. Now, interview again, it is of two types, direct and indirect. Okay, अब हम जब direct interview की बात करते हैं, direct interview is again of two types. One is structured interview and one is unstructured interview. Okay, in structured interview, हम जब कोई structured interview लेते हैं, जो tool है, that is the standardized schedule. Okay, in structured interviews, the tool which we use is a standardized schedule. हमारे पास questions set रहते हैं,
ओके हमें आइडिया रहता है कि हमको कौन सा क्वेश्चंस पूछना है, and then we prepare a schedule and we administer that interview schedule to our respondent. Okay, so this is the structured schedule. अब unstructured schedule में here the tool is the interview guide. हम इसको बोलते हैं interview guide. Interview guide में questions नहीं होता, but we have the broad areas which we want to cover. Okay, हमारे पास broad areas रहते हैं जो जिनके ऊपर हम सवाल पूछना चाहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरव्यू गाइड. तो ये हमारे पास एक सेट स्ट्रक्चर नहीं रहता है, इट इज अनस्ट्रक्चर्ड, एंड हियर द टूल व्हिच वी यूज इज द इंटरव्यू गाइड. सो इन एथनोग्राफी वी यूज बोथ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज. हम दोनों यूज करते हैं. कई बार वी यूज वन मोर मेथड व्हिच इज द की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यू. मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, बट आई विल मेंशन दिस टू यू. की इन्फॉर्मेंट इंटरव्यूज भी होता है. हम जब फील्ड वर्क करते हैं, हमें वी आइडेंटिफाई फ्यू पीपल, ओके, हु विल बी आवर मेन सोर्स ऑफ डेटा, जिनको उस विलेज के बारे में या उस पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में, एक स्कूल के बारे में उनको बहुत आइडिया रहता है. सो in the process of field work, in the process of data collection, they become our major source of data. इनको हम बोलते हैं key informants. So we also use one more technique, which is the key informant interviews. So this also is another major technique in ethnography. अब जो indirect है, मैं यहाँ पे mention कर रही हूँ, we may not use this in ethnography. Indirect interview में basically it is like it is telephonic interview, okay, जो कि हम directly face to face नहीं कर रहे हैं. It can be a telephonic interview, or it can many a times we may mail the schedule. We may mail the schedule and the respondent answers them. So it is not face to face, unlike the direct interview which is face to face. Okay. Now, one important aspect of ethnography here is we have to maintain the field notes. Okay, maintaining the field notes throughout. Now, 1 minute. Yeah, so maintaining field notes is very, very important. Now, I'll tell you how to write field notes, okay, because it will be for the benefit of research scholars and also all the participants, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हम फील्ड पे जो जाते हैं, पर फील्ड नोट्स कैसे लिखा जाए ये हमें आइडिया नहीं रहता है. ओके, सो ये चीज ये मैंने इसलिए इंक्लूड किया है so that all of you can know, you can have some understanding of how to maintain your field notes. अभी मैं बताऊंगी कि फील्ड नोट्स हम कैसे लिखते हैं. मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कि व्हाट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. ओके, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज इट इज अ टेक्निक wherein the observer is a part of the phenomenon or the group which is studied. And like I already mentioned, that the observer should be fully immersed in the field. Immersion of the field worker in everyday life and activities of the people studied. Participant observer has more latitude. One can observe interview in many situations, okay, because the fieldwork is for longer term, okay, and we can observe many things, many activities, and then we can observe many different contexts in which these activities take place. So that is why participant observer has more latitude. Empathetic understanding, as I was already mentioning, that we should be very, very empathetic, and we should relate with the people whom we are studying to get an in-depth data. Now, participant observation ka benefits kya hai? We have access to some unique kinds of information. Okay, what are these information? What a subject says in response to a question. Okay, what he says to other people. मतलब जो हमारे respondents हैं, वो हमारे question को कैसे respond कर रहे हैं, ठीक है? What he says to other people.
वो बाकी लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, what the person says in various situations and at various times. That is why these are the advantages of participant observation. हम जब सर्वे करते हैं, हम एक पार्टिसिपेंट से एक बार या मैक्सिमम 2 बार मिलते हैं, या एट द मोस्ट चलो 3 times we meet. Okay. In participant observation, in ethnography, the advantage is we can meet the group on a daily basis for an extended period of time. तो उससे फायदा क्या होता है, we get to know the people and how they behave in different contexts. Okay, so हमारा जो डेटा है, this is very rich, okay, very detailed and very in depth. हम लोग को जो डेटा मिलता है, that is very rich, very detailed, very in depth. Now we also get access to various non-verbal signals. Okay, जैसे कि हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, what are the gestures, okay, what are the signs, what are the symbols, what are the expressions, so various non-verbal signs जो हैं, that also we could get to see, which may not be possible अगर मान लीजिए हम एक क्वेश्चनर एडमिनिस्टर कर रहे हैं जिसमें खाली yes and no के टिक्स हैं. जब yes and no के टिक्स आते हैं, तब वो क्वेश्चंस क्या हैं, वो क्लोज्ड एंडेड हो जाते हैं, क्लोज्ड एंडेड हो जाते हैं, एंड हमारे पास we cannot express any further, which is very different in ethnography, where हमारे questions mostly open ended होते हैं, questions open ended होते हैं, and we give the respondents enough time, enough space to respond and to reflect on several issues. Now, and what do they feel? What do the subjects feel, say, and do about the matter? So basically, the crux of participant observation is that we get to observe many different things at many different points, and we also get to know the various verbal and non-verbal साइंस. जैसे कि मैं जब स्टडी करती हूँ, मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है टीचर प्यूपल इंटरेक्शंस. मैंने बहुत सारे क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस किए हैं जहाँ पे मैं क्लासरूम्स में बैठ के मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि व्हाट आर द इंटरेक्शन पैटर्न्स बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट्स. तो ये मुझे बहुत ही रिच डेटा मिलता है बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इसमें हम एक डिजाइन करते हैं ऑब्जर्वेशन शेड्यूल. ओके, दिस कैन बी वन मेजर टूल. अगर हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बिकम्स वन मेजर टूल वेयरइन वी सिट इन द क्लास एंड वी ऑब्जर्व. इट मे बी टीचर पीपल इंटरेक्शंस, it may be the teaching methodology. Okay, so we can observe a whole lot of things when we sit in the classrooms. अगर मैं classroom interactions की बात करूं तो now जब हम field work करते हैं, again we have to follow many ethical principles. In fact, I would say कि आप ये जो पूरा जो डेटा कलेक्शन है, मैं यहाँ पे डिस्टिंग्विश नहीं कर रही हूँ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव की, बट इन जनरल अगर देखा जाए तो डेटा कलेक्शन जो भी है, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स. इनफैक्ट क्वालिटेटिव रिसर्च में, स्पेशली इन एथनोग्राफी में, ethics becomes even more important. First ethical principle is practicing cultural relativism. Cultural relativism basically ये कहता है कि no culture is inferior or superior. Okay, we should view all cultures in the same way. ठीक है, इसमें कोई हायरार्की नहीं होना चाहिए. No culture is inferior or superior, but we should look at all cultures in the same way. Okay, it is इसका एक opposite term है जिसको हम बोलते हैं ethnocentrism. Okay, ethnocentrism. But यहाँ पे मैं cultural relativism की बात कर रही हूँ, wherein no culture is inferior or superior. So as a researcher, we should take this view that कोई भी culture inferior or superior नहीं है, and all are the same. No value judgments.
This is again another very important ethical principle. No value judgments or no preconceived notions. मान लीजिए मैं एक मेंटली, देन हम लोग का जो डेटा कलेक्शन होता है दैट बिकम्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव. Okay, so we should go with a blank slate. In fact इसको बोलते हैं tabula rasa. Okay, tabula rasa means a blank slate. That means we should not have any preconceived notions when we are going to the field. Another very important ethical principle is informed consent. Informed consent means हमारे जो भी respondents हैं, हम जिस किसी भी फील्ड साइट में जा रहे हैं, चाहे वो अर्बन सेटिंग हो, चाहे वो रूरल सेटिंग हो, चाहे वो स्कूल हो, एक्सेट्रा, वी शुड टेक द कंसेंट. हमको उनसे परमिशन लेना चाहिए कि व्हाट आर द एम्स ऑफ आवर रिसर्च, हम ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं एंड इसके क्या गोल्स हैं. Okay, so and we should take their permission beforehand, before proceeding to the field. Another very very important thing, use pseudonyms in field notes as well as in final reports. Like Dr. Renu was mentioning that all of you have to write a research paper. Okay, if suppose in your research paper you are using first hand information, अगर आप लोग by chance use कर रहे हैं, so one very very important ethical principle is to use pseudonyms. Pseudonyms in the sense, हम जो फील्ड का एक्चुअल नाम है या जो विलेज का एक्चुअल नाम है या जो रेस्पोंडेंट का एक्चुअल नाम है, हम वो अपने पेपर में नहीं डालेंगे. Okay, instead we use some other name, something imaginary you can use. Okay, so that the lives of people whom we are studying, they are not affected in any way. Okay, so pseudonyms, और मैं यहाँ पे अगर मैं simply बोलूँ तो false names मैं बोलूँगी. Okay, so use pseudonyms in your final reports. Again, another very important ethical issue is confidentiality of sensitive issues. ठीक है, हम कई बार sensitive issues के ऊपर research करते हैं. ठीक है, तो in sensitive issues we have to maintain the confidentiality. Again, participants का identity, in no way we should disclose the identity of the participants in our reports. उनको public नहीं करना है. Okay, so confidentiality should always be maintained. And consent of the people under study before embarking on data collection. ये मैंने जैसे पहले भी कहा है, informed consent. Okay, informed consent is very very important. Then utility concerns on the use of data is very very important. ठीक है, ये हमको पहले से ही उनको कम्युनिकेट करना है कि ये डेटा हम कैसे यूज करेंगे. ओके, प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द कम्युनिटी अंडर द स्टडी as the patent of indigenous knowledge is while maintaining the authenticity. अच्छा, ये मैंने स्पेशली मैंने ट्राइबल एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात कर रही हूँ. ओके, या फिर अगर हम ट्राइबल ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं, ट्राइबल्स हैव वेरी रिच इंडिजिनस नॉलेज. Okay, in fact their indigenous knowledge in natural resource management, okay, in health, in agriculture, मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ही ज़्यादा. मैंने ट्राइबल एरियाज में बहुत फील्ड वर्क किया है एंड मैं ये देखती हूँ कि उनके कैसे इंडिजिनस नॉलेज, बी इट इन द ट्रेडिशनल मेडिसिन के यूज में हो. आप किसी भी एक ट्राइबल बच्चे को ले लो एंड आप उस ट्राइबल बच्चे को अगर आप एक फॉरेस्ट में लेके जाते हो, द ट्राइबल चाइल्ड कैन टेल यू द नेम्स ऑफ ऑल द ट्रीज which we sitting in the urban locations, in the cities, in the towns, which we may not be able to do. So they have rich indigenous knowledge and उनका जो patents है, उनका to protect that indigenous knowledge is very very important. So that is why I have mentioned that the protection of rights of the community is very very important. ये particularly मैंने indigenous knowledge के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. Now, another very important aspect is objectivity. This is again another very important ethical principle. हम जब ethnography की बात कर रहे हैं, cultural relativism मैंने already बोला है, okay, and no preconceived notions, ये मैंने already बोला है that we should go to the field with a blank slate.
हमारे जो our mind should be like a blank slate. Then empathy, I already talked about empathy. Periods of detachment. Now periods of detachment मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ, मान लीजिए हमको 2 साल का फील्ड वर्क करना है. Okay, so we do field work for a year, we come back to our place, okay, we reflect on our findings, on our data, and again we go back to the field and again we continue our data collection. So that is why I'm saying in between periods of detachment is very, very important. Taking the perspectives of the subjects, views actions from perspective of the outsider, and these aspects keep researcher from lapsing into subjectivity. Ethnography में एक I would say कि ये debate है between subjectivity versus objectivity. Okay, कई बार ये questions होते हैं कि how the researcher can be so objective in the field. Okay, so this is one very, very that is why we always say that there should be a period of detachment. Okay, and we should continuously reflect upon ourselves कि हम क्या डेटा ले रहे हैं, हम कैसे डेटा ले रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, so that there can be, we can minimize the subjectivity. I have one request, Dr. Renuji, how much time I have? Ma'am, 20 more minutes you have, near about 20 minutes? 15 minutes, yeah. 15 minutes, okay. I'll try to wrap up quickly. Now, writing field notes. मैं ये quickly field notes बोलूँगी because I have included this because I have seen that many a times we do not know how to write the field notes. Now, field notes are basically written account of what the researcher hears, sees, experiences and thinks. Okay, हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं, हम जो भी देखते हैं, हम जो भी सुनते हैं फील्ड में, वो सारी चीजें हम फील्ड नोट्स में लिखते हैं. दिस इज एन एक्सरसाइज डन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन. Okay, so this is basically it is an exercise done after returning from the observation, interview or other research sessions. Now, अगर मैं briefly बोलूं तो it is the who, what, when, where and how of human activity. Okay, I hope this is this statement is clear. मैंने सोचा कि इसको मैं ऐसे put up करती तो it is more clear. It is who, what, when, where and how of human activity. In other words, I would say that field notes will include almost everything, whatever you observe. Okay, आप क्या observe कर रहे हैं, क्यों वो एक्टिविटी हो रहा है, कैसे हो रहा है, so all these things will be included in the field notes. Now, why do we write field notes? It is to field notes are maintained to facilitate the research process. Okay, क्योंकि ultimately हम जब ethnographic writing करते हैं, then field notes एक base बन जाता है. Okay, it becomes the base. And based on that field notes, we do our report writing. मैंने starting में मैंने एक example दिया था, M.N. Srinivasan का एक work है, The Remembered Village. I would again urge all of you to please go through the work. वो जो work है, it is entirely based on ethnographic study. And और एक work है Malinowski का, I'm not remembering the exact name. Malinowski study में क्या हुआ था, उनके एक debate है, field notes के इसमें एक debate है, wherein the field notes of the anthropologist was published. So you can also go through that work by B. Malinowski. Okay, so these are the important examples. So research notes or field notes are maintained to facilitate the research process through recording, observations, thoughts and questions. Now, field notes हम कैसे लिखेंगे? इसका दो चीजें हैं. First, of course, this is a disciplinary exercise. मैं यहाँ पे ये disciplinary exercise इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार we become lazy. हमें लगता है कि हम जब फील्ड से वापस आते हैं तो हमें लगता है कि आज हम नहीं लिखते हैं फील्ड नोट्स. ओके, या हम 2-3 दिन का ब्रेक दे देते हैं फील्ड नोट्स लिखने में. बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इट शुड बी रिटन ऑन ए डेली बेसिस.
because whatever we observe, whatever we interview, it remains fresh in our minds on the same day. अगर हम उसको पोस्टपोन करते जाएंगे, so many a times we may miss important data to mention in the field notes. और अगर हम वो field notes में ही नहीं mention कर रहे हैं, तब तो हम अपने report writing जो कि बहुत later stage में आएगा, उसमें तो फिर completely it will be missing. So that is why I'm saying it is a disciplinary exercise and it is also a systematic exercise. It should be done on a regular basis, on a daily basis. It is an outcome of participant observation. Okay, basically जो हम observe करते हैं, वो हम उसमें लिखते हैं, and it is a vital part of ethnographic research. What to include in field notes? मैंने इसका जैसे कि I already mentioned, it is the who, what, when, where, why. Okay, so the notes are rich in dialogue and description that give chronologically, event by event, conversation by conversation, account of everything which we see and hear. Okay, हम जो भी देखते हैं उनको हम chronologically, event by event, conversation by conversation, we keep noting them in our field notes. The content is descriptive and also reflective. Okay, we basically describe what we see, okay, and objectively record the details, and we the researcher attempts to be as descriptive as possible. अब field notes में you have to be as descriptive as possible. भले ही आप research report में you may not include everything what you have collected, okay, but at least in the field notes, whatever you have observed, you need to mention it. Another important aspect, especially in ethnographic field notes, we should note down the exact words in which people communicate their thoughts, ideas and beliefs. Okay, in fact ethnography writing में भी हम जब research articles लिखते हैं, we try to quote the exact what the participant has said. Okay, उनको हम quotations में डालते हैं. That is one important aspect of ethnographic writing. These ethnographic statements, characteristic narratives, typical utterances should be recorded as a whole. We should not miss anything. Okay, each word needs to be culturally understood and analyzed. What are the major areas? These are indicative. Okay, what areas I'm suggesting? These are only indicative, and I'll just finish. And can I take 5 minutes? Yeah, ma'am, you can. I'll take 5 minutes and then I'll take questions. Okay, so these are the major areas: portraits of the subjects, description of physical setting, then reconstruction of dialogue, accounts of particular events, depiction of actions and things people are trying to. ये बस एक indicative list है, but in short I would say आप जो भी चीजें observe कर रहे हैं field में, आप वो अपने field notes में लिखिए. Then the reflective part of field notes, this is again a little I don't have much time to explain on this. जो reflective part of field notes है, इसको हम mostly field diary कहते हैं. Okay, field diary, and where the subjective side is recorded and the emphasis is on speculation, feelings, problems, ideas, impressions and prejudices. Major areas, again, reflection on analysis, reflection on method, ethical dilemmas and conflicts, points of clarification. ये सारी चीजें हम field diary और the reflective part में we can include. I will finish in another 2-3 minutes. Writing field notes, ये बोलूँगी कि ये मैंने इसलिए include किया था just to give you a brief idea, but I would also like to mention that there is no hard and fast rule of how field notes is to be written. Okay, as long as you are able to understand, you are able to remember, and you are able to write, it is basically for our own record. जो field notes है वो हमें किसी दूसरे को दिखाना नहीं है, ये हमारे record के लिए है कि हम उसको कैसे mention कर रहे हैं. So doing field work and taking field notes is an art. It requires practice. ठीक है? The only way to learn is to do it.
ओके जब तक हम फील्ड नोट्स लिखेंगे नहीं तब तक हमें आइडिया नहीं आएगा कि कैसे लिखना है, एंड जब तक हम फील्ड नोट्स नहीं लिखेंगे तब तक हमको रिपोर्ट राइटिंग, एक कंप्लीट डिटेल्ड रिपोर्ट राइटिंग मिलना मुश्किल होगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ this is the last slide. What is the significance of ethnography? Why do we conduct ethnography? It is to understand how and why behavior is shaped in such way. Okay, understanding the context, complexity and the politics of social processes. जो भी social processes हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, हाँ किस लिए हो रहे हैं, and interpreting the hidden, intimate, tacit and unexpressed meanings. That is why in ethnography, since it's a long-term study, okay, we get access to the hidden, intimate and tacit meanings of various social processes. Ethnography के क्या strengths हैं? It gives an in-depth understanding. बहुत ही detailed account मिलता है जो कि सर्वे में या फिर हम कोई अगर brief case study कर रहे हैं, it is not possible. Okay, so we get the in-depth understanding. It gives a voice to a culture to express their views. Naturalistic settings, क्योंकि हम respondents के पास खुद जाके उनके साथ रह के उनकी language सीख के, so we are doing our data collection in its natural settings. So this is one very, very important strength. And tacit and hidden meanings. So we get to know many things which may not be possible in a short field work. ठीक है, हम 1 महीना 2 महीना फील्ड पे जाके we get only explicit, जो दिख रहा है हमको, बस वही हम डेटा कलेक्ट करके आते हैं. बट इन एथनोग्राफी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस. बट एक वीकनेस, मेजर वीकनेस ये है कि एथनोग्राफी जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि रिसर्च फेज जो है, PhD फेज जो है, दैट इज द बेस्ट फेज ऑफ डूइंग एथनोग्राफी. Okay, because in PhD phase we get the time of 1 year, 2 years to do the field work. Okay, it is a time consuming process. Yes, I agree, it is a time consuming process, but the richness of data which we get, this is very difficult to get such rich data using other techniques. Okay, so time consuming is one thing. Sometimes it is expensive also. Okay, because we need to pay multiple visits to the field. Okay, हमको कई बार field में जाना पड़ता है. We have to use certain gadgets, okay, to take photographs. We need a recording device and we need to travel a lot. So at times it is expensive also. So these are the few weaknesses. But when I see the strengths of the ethnographic method, I feel it is a very, very unique. Very, very unique. And if you want to do an in-depth and detailed study, this is the apt method, I would say. So these are the strengths and weaknesses. And thank you all for your patient hearing. Thank you so much, Sucharita ma'am. Yeah. Actually, मैं ज्योग्राफी डिसिप्लिन से हूँ, लेकिन आपने जिस तरह से एंथ्रोपोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस एथनोग्राफी को समझाया, वो एक एक चीज नीचे मतलब अंदर तक उतरती गई और ऐसा लग रहा था कि आप छोटे बच्चों को जैसे एक एक चीज को समझाते हुए चलते हैं, बिल्कुल वैसे चल रहे थे. The way you explain each and everything is so simple but very effective, very impressive. I just hope that my Hindi was clear. निश, अभी तक कोई क्वेरी ऐसी आई नहीं, अदरवाइज हमारा चैट बॉक्स भर जाता है कि आप बाइलिंगुअल दीजिए या चेंज कीजिए. तो आपकी इंग्लिश में ही इतनी सिंप्लिसिटी थी कि शायद जरूरत ही नहीं पड़ी. कुछ क्वेरीज हैं मैम, तो वन बाय वन राइट. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगी रुपेश कुमार जी को, जिन्होंने आज पूरे लेक्चर के दौरान लगातार वो कनेक्ट रहे और एडिशन भी देते रहे आपके साथ साथ जितना कुछ उन्हें पता था, और साथ ही साथ क्वेरी भी करते रहे और बहुत पॉजिटिवली उन्होंने अपना रोल यहाँ पे प्ले किया. तो रुपेश जी, आपको थैंक यू. हमें ऐसे ही पार्टिसिपेंट्स इस पूरे प्रोग्राम में चाहिए जो दिल से जुड़े और सीखने के जज्बे से जुड़े. तो उन्हीं का ही, उनसे पहले पवन शुक्ला हैं पार्टिसिपेंट, उनका मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रही हूँ मैम.
वो जानना चाह रहे हैं कि जो क्रिटिकल एंथ्रोग्राफी का जो एग्जाम्पल आपने दिया था वो उन्हें एकदम क्लियर नहीं हो पाया है। अगर आप एक एग्जाम्पल लेकर के उसे बता दें तो वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे। ओके ओके ओके। क्रिटिकल एथनोग्राफी मैंने जब बोला, अच्छा एक सेकंड, मेरा एक ये है कि मैं ये पीपीटी, शैल आई क्लोज दिस पीपीटी? श्योर मैम, या ओके ओके, हाँ या क्रिटिकल एथनोग्राफी जो है ये मैंने एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात किया था कि इन एजुकेशन, इन एथनोग्राफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन हम जब देखते हैं तो आई वाज सेइंग देयर आर टू व्यू पॉइंट्स। ओके, एक जो व्यू पॉइंट है वो ये बोलते हैं कि कैसे एजुकेशन इट हेल्प्स इन द अपवर्ड मोबिलिटी। Okay. On the other hand, there is another theoretical perspective on education which says that education it is a socially conservative force, and ये जो society में जो already existing inequalities हैं, जो social inequalities हैं, जो economic inequalities हैं, ये education कैसे उसको reproduce करता है। ओके, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, आप पियरे बोर्डियो का स्टडीज देखिए। ओके, और अगर मैं इंडिया में अगर बात करूं तो एक आर्टिकल मैं यहाँ पे रिफर करूंगी, जेफरी एंड जेफरी। ओके, जेफरी एंड जेफरी के एक आर्टिकल है, मैं टाइटल अभी मुझे एग्जैक्टली रिमेम्बर नहीं है, आई विल फॉरवर्ड द आर्टिकल टू द ऑर्गेनाइजर्स, मे बी आपको वो मेल कर देंगे। तो जेफरी एंड जेफरी का जो आर्टिकल है वो एग्जैक्टली इसी चीज पे डील करते हैं कि कैसे ये एजुकेशन जो है that is a socially conservative force, and कैसे एजुकेशन से upward mobility नहीं हुई है, and they have used ethnography. So critical ethnography is basically within the context of education, मैंने बात किया है कि कैसे education may not always be a progressive factor, but it is in many cases it is a conservative factor as well. थैंक यू मैम। I will share that article. मैं वो आर्टिकल ऑर्गेनाइजर्स को दे दूंगी and they can mail you. या मैम बिल्कुल, हम जो इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है हम उसमें शेयर कर देंगे ताकि ये उन तक पहुंच सके आराम से। And one more thing, like I published many on ethnographic studies. Okay, so I will also forward you my articles. उससे आप लोगों को ये आइडिया लगेगा कि ethnography को कैसे लिखते भी हैं। ठीक है, जैसे कि मैं बोल रही थी कि कैसे उनका लाइफ को डिपिक्ट करना है, कैसे जो डेली इवेंट्स हैं वो डिपिक्ट करना है, कैसे जो एक्चुअल कोटेशंस हैं वो यूज करने हैं। तो मैं अपने कुछ आर्टिकल्स हैं, आई विल फॉरवर्ड दैट आल्सो। ओके मैम, रुपेश कुमार जी का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम टाइम फिक्स्ड फॉर फील्ड वर्क टू बी अ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर इन एंथ्रोपोलॉजी? Okay, so minimum time of fieldwork जो है, we usually say it should be at least 1 year. 1 year is the minimum time. Okay, and maximum time is up to you. कि आप maximum time कितना आप fieldwork करना चाहेंगे, that is up to you. But 1 year के बाद आप जब field में रहेंगे तो आपको खुद idea लग जाएगा कि आपको कुछ नया मिल रहा है या आपको वही repetition मिल रहे हैं। Okay, when you are in the process of data collection, you get an idea that whether you are getting new things now or you are getting the repetitive data. So that time you can start winding up. Okay, but the minimum requirement is 1 year for sure. उसमें आप starting का few months आप rapport building का ले लीजिए. Okay, wherein you are not supposed to do any data collection, but to just observe and to build a trust between the researcher and the researched. Once the rapport building is established, once the rapport is established, then you can continue your fieldwork at least for a period of 1 year. ऐसे कई सारे स्टडीज हुए हैं, लाइक मैं और एक एग्जांपल देती हूँ, मैं बोल रही थी मीनाक्षी थापन, लाइफ एट स्कूल। ओके, उन्होंने एक पीरियड में लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क किया एंड अगेन शी डिड रीस्टडी आफ्टर 10-15 years, सेम स्कूल में जाके अगेन अ रीस्टडी वाज कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड क्या चेंजेस आए हैं। तो ऐसे भी कई सारे स्टडीज रीस्टडी हम बोलते हैं, wherein we visit the same site after a gap of maybe 10 years, 15 years, and we again do the study. So that also we can do.
थैंक यू मैम। रुपेश कुमार जी फिर से पूछना चाह रहे हैं कि कैन अ रिसर्चर यूज टेलीफोनिक इंटरव्यू टू फुलफिल द इनकम्प्लीट एथनोग्राफी ड्यूरिंग पेंडेमिक? इज इट फेयर अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? Usually ethnography में we do not do telephonic interviews usually, because in ethnography में जैसे मैं बता रही थी कि हम लोगों को observation is very very important. ठीक है, हम टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या है, we cannot observe the expressions, okay, we cannot observe the non-verbal signs, okay, and जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से जो रिच डेटा मिलता है वो यूजुअली टेलीफोनिक इंटरव्यू से नहीं मिल पाता है. बट जैसे कि मैं अभी री-स्टडी का बात कर रही थी, री-स्टडी में मान लीजिए आप री-स्टडी करके वापस आए हैं एंड इफ सपोज कुछ डेटा कहीं पे मिसिंग है, ओके, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है, एंड यू कैन गेट दैट इंफॉर्मेशन with a telephone call, then you can go ahead. But telephonic interview should not be the only and prime method of ethnography. ठीक है, आप as a sub addition, आप as an addition telephonic interview बाद में ले सकते हैं, but in the at least in the first 1 year आपका participant observation and direct face to face interview is a must. Thank you ma'am. Shrabini Sandeep wants to know that can we refer the ethnology study of another writer and use it in his research? Can we refer? Can we refer the ethnology study of another writer and Okay. use it in my research? Of course you can. This, I think we are talking about the report writing part, not the data collection. Yeah, I think आप बाद का part बोल रहे हैं जब आप लिखते हैं. Of course you can refer to any study provided आप उसको हमेशा cite करो. ठीक है, that is one of the major ethical principle. आप जो भी study refer कर रहे हो, आप towards the end and within the text, आप उसको हमेशा cite करो within the text and towards the end. If you are doing that, you can refer any study. Thank you ma'am. Next participant है सिद्धप्पा नारागति. वो जानना चाहते हैं कि मैडम, आर यू बिलीव दैट द डेटा कलेक्टेड इन रूरल एरिया, अर्बन एरिया एंड मेट्रो सिटीज आर द सेम एंड हाउ? They are the same. हाँ, Okay, maybe no. he or she is talking about the technique of the data collection. नहीं, I will clarify. अगर मैंने इसको सही समझा है, I would like to clarify this. See, of course, this is very very obvious that the data which we collect in different settings would be different. Okay, अब हम setting के क्यों बात करें? हम within the same setting, within the same setting, अगर मान लीजिए आप urban, if you are doing your research in an urban setting, okay, and if you are doing it in 2 schools, the data you will get from the 2 schools will be very different. Yeah. And the data which you will be getting from 2 different respondents will be very different. I will give you one example here, okay, one very very interesting example here, and I will request you to go through that study. There was one study by Robert Redfield. Okay, Robert Redfield did one study on that study is titled Tepoztlan. Okay, now Tepoztlan is, again, it is an ethnographic study. You will you Google it and you will get to know. It was an ethnographic study, an in-depth account of the village. अब यहाँ पे what happened after 15-20 years, Robert Redfield's student, he is named Oscar Lewis. Okay, Oscar Lewis visited the same place and he collected data and he found entirely different of what Redfield has studied. Okay, so the second ये जो re-study है, it is titled Tepoztlan Revisited. Okay, so the first study was the teacher. He did a study and one set of findings, and the student when visited the same field site and again another set of findings. So with 2 different researchers going to the same field, you may get different data.
Okay, so that is why in research we always say that triangulation is very very important. मेरे पास time नहीं था, but triangulation, I would say triangulation not only of data, triangulation of methods, triangulation of theories. All this is very very important to assess the validity of the research. Okay. Thank you, ma'am. Yes. Dr. Nemi wants to know that can ethnographic study possible for procedural or governance research of modern organization? Of course it is. In fact, right now my research is on governance issues in education only. Okay, so definitely this is an important area, and within the governance, like even if my PhD research when I was doing on government schools and private schools, there were a lot of governance issues. So it is not that ethnography is confined to few areas. Okay, I would say wherever you see the cultural aspect, okay, you can do an ethnographic study. Okay, wherever you see human beings, wherever you see interactions, okay, you can do an ethnographic study. लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम, क्योंकि टाइम कंसर्न हमारे ध्यान में रखना होता है ये चीज. तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन, नाज़मीन अहमद वांट टू नो कि थोड़ा सा अगर आप फील्ड राइटिंग के बारे में आपने बता दिया, बट क्या आप एथनोग्राफिक राइटिंग के बारे में भी थोड़ा सा कि उसको हम कैसे लिखें, मतलब फील्ड नोट्स से उसके बाद में? Yeah, you are basically talking about report writing, I think. No, actually this is the last step of ethnographic writing, and मैं खाली रिपोर्ट, मैं बहुत ब्रीफ में बताऊंगी, मैं खाली रिपोर्ट राइटिंग की ही नहीं, मैं एकेडमिक राइटिंग जिसको बोलते हैं, हाउ टू व्हाट टू से, हाउ टू bring that report as part of academic writing, that is also very very important. Basically once आपका field notes ready हो जाता है, then आजकल तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के, ओके, जैसे कि NVivo की बात करते हैं, देन देयर आर सेवरल अदर सॉफ्टवेयर्स. अगर आप ट्रेडिशनली इफ यू वांट टू डू योर रिपोर्ट राइटिंग, बेसिकली वी ट्राई टू सी द लिंकेजेस, द पैटर्न्स, and from there we try to analyze and make it to further abstraction. Okay, what I will do, I will forward 2 of my papers. Okay, both are based on ethnographic studies, so I will forward 2 of my papers and you will get an idea of how ethnography is to be written. ठीक है, in writing an ethnography, your methodology section should be very very strong. लगता है मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं. क्वेश्चंस उनके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए थे. लास्ट में हमारा समरी सेशन ही बचता है और एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स. तो मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में समरी मैम के लेक्चर की आज की बता देती हूँ. सुचरिता मैम ने डूइंग एथनोग्राफी इन क्वालिटेटिव रिसर्च पे बात की, और इन्होंने स्टार्ट जो किया था वो बहुत ही एक जिसको कहें बेसिक चीज को लेकर किया, जिसने बताया कि यूनिक मेथड है एथनोग्राफी का, और एथनोग्राफी को जो एंथ्रोपोलॉजी से स्टार्ट हुआ उसे अब हर एक स्ट्रीम और हर एक डिसिप्लिन इसको ले रहा है. उसके बाद में इन्होंने बात की डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में, फिर फील्ड नोट्स के बारे में, और राइटिंग कैसे की जाए इसके बारे में बात की. तो मीनिंग में इन्होंने बताया कि डिस्क्राइबिंग और अंडरस्टैंडिंग अनदर वे ऑफ लाइफ फ्रॉम द नेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो पीपल्स की डिटेल्स जो है, या जिसको हम कहेंगे पोर्ट्रेट ऑफ द पीपल, वो चीज एथनोग्राफी होती है. और जैसा वो लोग हैं उसको उसी तरह से लेते हुए अगर हम अपनी राइटिंग्स में लिखते हैं तो उसे हम एथनोग्राफी कहेंगे. यहाँ पे उन्होंने एम बताए थे. उन्होंने बताया था 2 इसके मेन एम है एथनोग्राफिक स्टडी के. फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द कल्चर, और सेकंड जो है वो है एमिक स्टडी, यानी नेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां की स्टडी की जाए. इन्होंने आगे बताया कि एथनोग्राफी जो है वो इन सीटू स्टडी है, इसको कहीं और क्रिएट करके नहीं करना चाहिए. जहां पर जिस जगह का हमें अध्ययन करना है उसको हमें वहीं पर ही अध्ययन किया जाए तो बेहतर रिजल्ट हमारे सामने आते हैं.
फिर उन्होंने बताया कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो वेरिएबल है, कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इसलिए इसका अध्ययन करते समय इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये भी बताया कि एथनोग्राफिक स्टडी की जो रूट्स है वो एंथ्रोपोलॉजी में है, और एंथ्रोपोलॉजी दैट इज रिलेटेड विद द कल्चर। तो एक तरह से हम ये मान के चलें कि एथनोग्राफी जो है वो कल्चरल स्टडीज जो है, और जो कि एक कॉम्प्लेक्स होल को स्टडी करने का तरीका है, तो उसी से रिलेटेड। फिर इन्होंने डिफरेंट एथनोग्राफिक स्टडी के एग्जाम्पल्स इन्होंने लिए थे, जिसमें ये मैलिग्नोस्की की बात की थी इन्होंने, मार्गरेट मेड की बात की थी, एमएन निवास की बात की थी, उन्होंने मोनोग्राफ की भी बात की, और लाइफ ऑफ द स्कूल जो मीनाक्षी थापन है वो इन्होंने रिकमेंड किया था कि वी शुड स्टडी ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद टाइप ऑफ एथनोग्राफी इन्होंने दो तरह से इसको डिवाइड किया था। पहला इन्होंने इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने 4 पार्ट्स में बांटा था। सुचरिता मैम वापस हमसे जुड़ चुकी हैं, वेलकम मैम। एक्चुअली क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद में फिर हम समरी की तरफ बढ़ते हैं, तो मैं वही समरी प्रेजेंट कर रही थी। साथ ही इन्होंने ट्रेडिशनल, माइक्रो, मैक्रो और क्रिटिकल एथनोग्राफी के टाइप्स के साथ साथ कुछ नए एडिशंस के बारे में बात की थी, जहां इन्होंने मल्टी साइटेड, जिसमें माइग्रेंट लेबर्स का एग्जांपल देते उन्होंने बताया था, और ऑटो एथनोग्राफी जिसमें ऑटोबायोग्राफी, जिसको हम एक तरह से मान सकते हैं कि बायोग्राफी में हम सिर्फ राइटिंग्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंसेस की बात की थी। एक नए एडिशन की बात इन्होंने की थी, जिसमें वर्चुअल एथनोग्राफी की मैम ने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद डूइंग एथनोग्राफी से रिलेटेड काफी चीजें इन्होंने कही कि जो प्रॉब्लम्स इन्होंने खुद ने फेस की, उन सारों से बचने के लिए उन्हें कुछ टिप्स मैं यहाँ कह सकती हूँ दिए हैं। फर्स्ट ये कि स्टार्ट करना इजी नहीं होता, क्योंकि एक विश्वास, एक रैपो नहीं हो पाया है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। पर धीरे धीरे इन्होंने उन चीजों को कैसे ओवरकम किया वो सारी बताया इन्होंने, कि डेटा कलेक्शन वर्बल और नॉन वर्बल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्बल इसका अगर 50% लेता है तो 50% नॉन वर्बल भी ले रहा है, क्योंकि ये हमें डिटेल्ड, रिच और इन डेप्थ डेटा जो है वो हमें देता है। उसके बाद टेक्निक्स पे इन्होंने बात की कि ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू और फील्ड नोट्स तैयार करने, ये 3 चीजें इन्होंने टेक्निक्स में ली। ऑब्जर्वेशन में इन्होंने पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट और क्वासी पार्टिसिपेशन की बात की, और इन्होंने बेस्ट स्टडी उसी को बताया है कि जब पार्टिसिपेंट जो होता है, हम पूरी तरह से उनके साथ इन्वॉल्व होकर के और फिर अगर डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ स्टडी। इंटरव्यू में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के बारे में इन्होंने बात की। वहीं फील्ड नोट्स कैसे बनाए जाए इसके बारे में बात की, बट उससे पहले एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बात की, जो क्वालिटेटिव, जिसको हम कह सकते हैं रिसर्च का एक जिसको कह सकते हैं आत्मा है, क्योंकि अगर एथिकल चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया तो पूरा का पूरा रिसर्च जो है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया जाता है उस पर। यहाँ पर आपने कल्चरल रिलेटिविज्म में एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर हम ये मान के चलेंगे कि दिस कल्चर इज द सुपीरियर देन द अदर वन, तो हम कभी भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे डेटा के साथ में, और उनकी बात को हम कभी भी रख नहीं पाएंगे प्रॉपर तरीके से। दूसरी बात आपने कही कि किसी भी तरह का नोशन, हमें प्री कंसीव नोशन हमें अपने साथ नहीं लेके जाना है, बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की तरह जाना है और उन्हीं चीजों को नोट करते रहना है जो हमें वहां से मिल रही हैं। प्रायर कंसेंट की जरूरत आपने बताई, कॉन्फिडेंशियलिटी की आपने यहाँ पे बताई, स्यूडो आपने यहाँ पे कैरेक्टर्स और नेम के बारे में यहाँ पे बात की कि उसे जरूर मेंशन करना है यहाँ पे, ऑब्जेक्टिविटी का ध्यान रखने की बात की। लास्ट में आपने फील्ड नोट्स कैसे लिखे जाएं, क्यों लिखे जाएं, किसके बारे में लिखे जाएं, किन चीजों को ध्यान में रख के लिखे जाएं, इन चीजों को बताया, और लास्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में बात की। सुचरिता मैम, थैंक यू सो मच। यह एक कंप्लीट लेक्चर था जहां आपने बेसिक मीनिंग से स्टार्ट करके और आप इसको लास्ट वीकनेस और स्ट्रेंथ तक लेके गए। वी आर वेरी ऑनर्ड एंड फील a great pleasure that you stayed with us, और आपने बहुत अच्छे से इसको डिलीवर किया। थैंक यू सो मच। Now it's over to you, Dr. J.D. Soni sir. Thank you, Renu, for nice moderation, and thank you very much for Suchrita. You have presented very well, and I am sure that our participants got hold on a new mechanism, a new methodology, that is ethnography. You have elaborated right from the beginning. You have started with the meaning and then described the type of ethnography, and then in a very lucid manner you moved ahead, and you have covered almost every part of
of this research exercise that is called ethnography. We are really very thankful, and I am really expressing my thanks from the entire team. But for the formal vote of thanks, I request the organizing secretary of this program, Shri Om Prakash Saini, to give the formal vote of thanks. आज के वक्ता डॉक्टर वी सुचित्रा मैडम, आपका इस ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैडम, आपने एंथ्रोग्राफी के बारे में सूक्ष्मता से प्रतिभागियों को समझाया। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रतिभागियों को इससे निश्चय लाभ मिला है तथा वे अपने शोध को नई दिशा दे पाएंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट राइटिंग का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है। इसके लिए रिपोर्ट राइटिंग कमेटी कन्वीनर डॉक्टर रेणु पुनिया एवं उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। दिनांक 4 अक्टूबर 2020 को हुए इस सेशन की आज हिंदी में रिपोर्ट प्रस्तुत की रेणु बगड़िया ने एवं इंग्लिश में रिपोर्ट प्रस्तुत की शुभेंद्र मुखर्जी ने। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। रिपोर्ट कमेटी के आज की रिपोर्ट लिखने वाले मेंबर अर्पिता गिरी एवं रेणु बगड़िया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। इस प्रोग्राम के पैटर्न, को पैटर्न, मेंटर, कन्वीनर डॉक्टर जेडी सोनी, डॉक्टर रविंद्र कुमार एवं समस्त ऑर्गेनाइज टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस प्रोग्राम में जुड़े सभी प्रतिभागियों का आभार। पुनः आप सभी का धन्यवाद एंड आभार। थैंक यू। Thank you. And I would like to say that the pleasure was all mine. I thoroughly enjoyed the session. And मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों के साथ interact करते हुए. And मेरा email ID आप लोगों के पास है, तो कभी भी कुछ भी doubt हो in relation to ethnography, I'm always there to write and clarify. Okay. So once again, मैं सारे organizers को, especially Dr. Jitendra Soni ji and Dr. Renu ji को मैं thank you कहना चाहूँगी, and Om Prakash Saini ji, आपको particularly thanks, क्योंकि जो vote of thanks देते हैं हम उनको usually thank you नहीं बोलते, तो हम सबकी तरफ से आपको भी thank you, धन्यवाद। Thank you, Suchrita. And I must say that at this very young age, you have a beautiful command on your area of research, and you have addressed all the queries in a very beautiful manner. And the way you have presented, that is showing that how much you are involved in the entire process of ethnography. We are really thankful, and we are really feeling grateful that you have come with us. You have shared the board with us. And in future also, whenever we feel that, we will really invite you for such research endeavors. Thank you very much for joining. Thank you. Now we are ending this meeting. Okay, thank you.